इम्पोर्टेंट कंपनी को कवर कर लेते हैं हम। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का IPO आज से खुला है और उनके मैनेजमेंट से हमारी बात हुई है। इशू के जरिए आपको बता दें कि करीब 390 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी और प्राइस बैंड जो है वो 414 से 436 रुपए के बीच है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि EMS से जुड़ी इस कंपनी है। तो कंपनी के कारोबार को और विस्तार से समझ लेते हैं और IPO के बाद कंपनी की क्या कुछ योजनाएं हैं ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के CMD जुड़े हैं कुन अहमद बिचा और कंपनी के CFO RM सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो सुब्रमण्यम जी आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि फ्रेश इशू के जरिए जो रकम जुटाएंगे उसमें से 145 करोड़ जो जुटाएंगे आप, उसका इस्तेमाल आप अपने कर्ज को कम करने में करेंगे। और नवंबर के अंत तक हमने देखा कि कंपनी के बुक्स में जो कर्ज है वो करीब 300 करोड़ के आसपास का है। तो ये जो रकम आप जुटा रहे हैं उसके जरिए आपके कर्ज में कितनी कमी आएगी और आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप, कितना कर्ज कंपनी के बुक्स पर रहेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। I'll answer that. I'll explain the rationale for the IPO. Today, we are seeing a substantial growth momentum with all the global happenings in terms of geopolitics in China +1. We are seeing a huge growth momentum, and we want to make sure as a company we are fully funded for that. That's the primary reason for the fundraise. And in terms of primary, we are trying to raise about 320 crores. And in this 320 crores, 145 crores is meant for debt reduction or prepayment of debt, and 90 is about for working capital. Today, as you rightly said, November 22, the net debt is about 300 crores, out of which 145 crores will be used for debt reduction. And again, this will lead to about 50% of the debt coming down and leading to the interest cost saving as well. Just moving on to the working capital, we are a capital-light business in terms of fixed assets, but a working capital-intensive business. On a steady state, we will normally have about 60 to 90 days of working capital, net working capital. Today, it's slightly elevated because of the inventory and chip shortage. This is about 120 days in terms of days of number of sales. We hope as we move on down the line, we are seeing the early signs of easing of the chip shortage and component. With that, probably 6 to 12 months down the line, we should get back to the normal steady state. कुनहमद जी आपसे समझना चाहेंगे, अब सप्लाई शॉर्टेज की अगर बात करें तो आपकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर, जिस पर कि हम सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कतें भी हमने हाल फिलहाल में देखी है। अभी कैसी देख रहे हैं आप सप्लाई चेन के फ्रंट पर, क्या जो दिक्कतें थी वो कम होते हुए नजर आ रही हैं? So आप तो बात कर रहे हैं सप्लाई चेन बहुत मुश्किल है। लास्ट 3 years it has been very difficult, but what we are seeing is the end of that. We believe that in 6 to 12 months normalize. So if you look back 12 months back, we had serious concern on when the integrated circuits will come, not only for us but for the whole industry as such worldwide. But today a lot of that is happening. And it's still not gone away, but we would say 30 to 40% of the problem still is there. And we would anticipate that to be comfortable 6 to 12 months from now. सुब्रमण्यम जी, मार्केट मार्जिन को लेकर आपसे आउटलुक समझना चाहेंगे। आपके US और इंडिया कारोबार की बात करें तो करीब 4 मेजर यूनिट्स हैं, तो किस तरह के मार्जिन आप वर्कआउट कर रहे हैं? US मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में स्पेसिफिकली बताइए। Our major units, about 4 major units are there. 2 of them in Chennai, 1 in Bangalore, and 1 US में है. Okay. And in terms of production, we are about 80% production is based out of Chennai, of India, and 20% is based in US. Whereas the market-wise, about 62% of our market is US based, and the remaining 38% is India and growing. That's in terms of how broadly we are structured in. Margin-wise, if you look at it in terms of India, today what you're seeing in a consolidated P&L balance sheet is weighted average 1, and India is higher than that, and US will be lower than that, the US cost structure being higher. Having said that, our business model is about having a US front end, which is a very unique differentiating factor when compared to the rest of the peers in EMS companies in India. That gives us an advantage in terms of acquiring new customers. And we will maintain this front end in terms of keeping the minimal approach in terms of production and the final assembly there.
So that gives us advantage in terms of growing market. ऑलराइट, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और कंपनी के आगे की स्ट्रैटेजीज पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे एवलॉन टेक के मैनेजमेंट, इनका आईपीओ आज से खुल चुका है और इस पर हमारी नज़र रहेगी, इसका प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर हमारी नज़र रहेगी आज से लेकर 6 अप्रैल तक। अगर आपको आईपीओ में पैसे लगाने हो तो आप लगा सकते हैं।